மகிழ்ச்சியான செய்தி. இதயம் நலனையின் விலை லிட்டருக்கு ரூபாய் 105 குறைஞ்சிருக்கு. செப்டம்பர் 2023ல 1 லிட்டர் இதயம் நலனையின் அதிகபட்ச விலை ரூபாய் 503. ஆனா இப்ப 1 லிட்டர் இதயம் நலனையின் விலை ரூபாய் 398 மட்டும்தான் தமிழ்நாட்டுல. அப்ப இனிமே எல்லாரும் இதயம் நலனை வாங்கலாம் இல்ல? विद्यालयों में जगह नहीं छोड़ेंगे। ये राष्ट्रभक्त लोगों के राष्ट्रभक्त तैयार करने के लिए काम होगा, ये समझने की जरूरत है। और उनका जो समर्थन करेंगे उनका भी समय लंबा नहीं है, मैं बता देना चाहता हूं, उनका भी समय लंबा नहीं है, यह उनको इस बात का समझ लेना चाहिए। और माननीय सभापति महोदय जी, सर बैठो, मैं बोल रहा हूँ, मैं इल्ड कर रहा हूँ उनको, मुझे इल्ड करने में कोई दिक्कत नहीं है। वो कह रहे अर्बन नक्सलाइट कौन है, मैं कह रहा हूँ प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, तो सामने प्रत्यक्ष है वही प्रमाण है। ये विचारधारा से होता है साहब, ये आदमी के व्यक्तित्व से नहीं होता। जवाब दिया है पार्लियामेंट में कि अर्बन नक्सल की हमारे पास कोई परिभाषा नहीं है, मैं उनको आग्रह करूंगा कि आपकी फोटो लगा दे तो परिभाषा आ जाएगी। तो माननीय सभापति महोदय, मैं ये कह रहा था कि शिक्षा के बारे में और शिक्षा के क्षेत्र बारे में और नई शिक्षा नीति के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री जी ने वेद मैंने शुरू किया था ना कि हाँ और ना भी अन्य जन करना ने जब थे जानते थे, इसके आदेश के वेद, उन वेदों पर खोज करने के लिए, प्राचीन हमारे ज्ञान को लाने के लिए इस नई व्यवस्था की गई है। उसमें भी 72.5 करोड़ रुपए का खर्च किया गया है। अब व्यवस्था की खोज कर रहे हैं हम। हमारे यहाँ पर मैंने कल भी उदाहरण देकर क्या खगोल पूछ रहे किसकी खोज कर रहे हो, हमने आर्यभट्ट को पढ़ा दिया तो क्या गलती कर दी? आर्यभट्ट को हमने नहीं पढ़ाया, ये पुरानी खोज। आर्यभट्ट को नासा ने पहला खगोल शास्त्री लिखा और उसका फोटो लगाया वहां पर, तो हमने वो लिस्ट भी साथ दी है कि आर्यभट्ट ने लिखा है कि मेरे पहले 122 ये खगोल शास्त्री और हो गए। वो खगोल शास्त्री जो ये बताते हैं कि बृहस्पति यहाँ है, गुरु वहां है, तब जाकर महाकुंभ बढ़ता है, तो उनको पढ़ाने का काम किया। तो वो ज्ञान का काम है, वो प्राचीन भारतीय ज्ञान को करने का काम भी इन्होंने किया। माननीय सभापति महोदय, शिक्षा में अभूतपूर्व आमूल चूल परिवर्तन हुआ है मोदी जी के काल में। कल मैंने कहा था कई क्रांतियां हुई, आज भी मैं कहना चाहता हूं बहुत क्रांतियां हुई। सबसे पहले आर्थिक क्रांति, आज जीडीपी विश्व में हमारा सबसे ज्यादा और चौथा नंबर की अर्थव्यवस्था होने वाले हैं 2026 में। ये आर्थिक क्रांति हुई, कृषि क्रांति हुई, राजनीतिक क्रांति हुई, सांस्कृतिक क्रांति हुई, और ये जो 7वीं क्रांति है सप्त क्रांति में, वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की शैक्षिक क्रांति हुई। और ये जो 7 क्रांतियां और अंत्योदय, हम सुनते थे कि पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने अंत्योदय दिया, हम सुनते थे कि जयप्रकाश नारायण जी ने जेपी मूवमेंट में टोटल रिवॉल्यूशन की बात की थी, संपूर्ण क्रांति की बात की थी। तो संपूर्ण क्रांति कब होती है? जब एक एक चीज में क्रांति होती। तो हमने आर्थिक क्रांति की, हमने राजनीतिक क्रांति की। ये सब राजनीतिक क्रांति है कि आसाम से लेकर और गुजरात तक और आगे पांडिचेरी तक और ऊपर तक जाकर आपका भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहरा रहा है। ये राजनीतिक क्रांति नहीं, ये राजनीतिक क्रांति, ये राम मंदिर का निर्माण होना, ये काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बनना
और ये महाकुंभ का इतना बड़ा आयोजन हुआ, ये सांस्कृतिक क्रांति साहब, ये सर आ रहे हैं, ये हमारी क्रांति। मोदी जी जब जाते हैं तो दुनिया में सबसे ज्यादा किसी को, भारत के प्रधानमंत्री को अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रों के जो उनको प्रतिभा सम्मान मिले हैं, बार बार उनको पुरस्कार मिले हैं, ये हमारे भारत को विश्व गुरु की ओर ले जाने की क्रांति नहीं है क्या? मोदी जी अपने दिग्विजय सिंह जी उसकी क्रांति की बात कर रहे थे। तो हम मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सारे बातों के कारण हम एक क्रांति की ओर अग्रसर है। अरे टोटल क्रांति है और संपूर्ण क्रांति है। और मैं ये कहना चाहता हूं समाप्त करने से पहले कि हमने ये जो नई शिक्षा नीति लागू की है, भारत वैश्विक अनुसंधान का शिक्षा का केंद्र बनेगा। जैसे कि नालंदा था, जैसे तक्षशिला था, ऐसे विश्वविद्यालय भारत में बढ़ेंगे। विदेशी विश्वविद्यालयों के कैंपस भी हमने यहाँ पर खोल दिए हैं। और ये मोदी जी के युग में शैक्षिक क्रांति है। ये क्रांति नहीं, संक्रांति है। क्रांति वो होती है जिसमें केवल विद्रोह होता है, संक्रांति वो होती है जिसमें संस्कार की लिपि लिखी जाती है। तो ये नई शिक्षा नीति संस्कार की लिपि लिखी गई है और अब निश्चित रूप से इस संपूर्ण क्रांति होगी, शैक्षिक क्रांति होगी। मैं माननीय प्रधान जी को और माननीय प्रधानमंत्री जी को इस नई शिक्षा क्रांति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देकर अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार। श्री रीता प्रताप बनर्जी, 12 मिनट समय है आपका। Thank you, Madam. As I speak on behalf of my party, AITC, I want to mention that education is the basic building block of every society. It is the single best investment that countries can make to build prosperous, healthy, and equitable societies. But unfortunately, education for all still remains a distant dream in our country. Since decades, discussions and demands for allocation of 6% of GDP on education continues. Union expenditure on education in the budget has been 0.37% of the GDP, much below the set target of 6% of the new education policy 2020. Ensuring equitable access to quality education is one of the greatest challenges facing the country. 80% of our youth are unemployed. 1 in every 3 youth are neither in education, employment, or training. 93% of the workforce, contributing to more than 50% of our GDP, is employed in the unorganized sector, madam, with no job security, social security, and are deprived of statutory benefits. Now, as we discuss education, Honorable Minister is here. Now, I want to mention, without any consultation with the state governments, the NEP has been forcibly thrusted upon the states. Our state government was forced to start the 4 years graduation course with interdisciplinary and multidisciplinary framework so that the students of the state don't lag behind or suffer as far as the all India perspectives are concerned. But the huge infrastructural expenditure that the state government is incurring is not borne by the central government. Leave aside the allocation for meeting such huge expenses, the union government is completely silent about the areas from where this huge expenditure will be met. The persistence of the governor as chancellor, this model has caused numerous problems in the governance of state universities. While state governments fund these universities, governors wield substantial power without corresponding accountability. This creates a dual authority system with conflicting demands. Disagreement between governors and state governments, particularly in opposition-ruled states, lead to delays in appointing VCs, causing administrative paralysis. These delays affect areas such as the appointment of staff, the implementation of projects, and even the awarding of degrees. Now, some governors rely on political interference, often prioritizing the center's political agenda over the university's autonomy and interest. Allowing governors appointed by center to control state institutions compromises the principle of federalism.
State universities should be fully accountable to elected state government elected by the people. The search committee headed by former Chief Justice of India, U. Lalit, had made some recommendations. In spite of those recommendations, the governor of West Bengal has only appointed 14 permanent vice chancellors out of the government-run and aided 31 universities. দীর্ঘদিন ধরে রাজ্য সরকারকে এড়িয়ে সরকার পোষিত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের নিয়োগ করা হচ্ছে। যে সমস্ত উপাচার্য সরাসরি যোগাযোগ রাখছেন না, তাদের অনৈতিকভাবে সরিয়ে দিয়ে নিজের পছন্দের লোক বসিয়ে দিচ্ছেন আচার্য। এর ফলে রাজ্যের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা একেবারে নষ্ট হতে বসেছে। In the recently published UGC draft regulations, all power for appointments of vice chancellors have been of the state-run and aided universities have been vested in the hands of the chancellors. The governors who are the chancellors are completely ignoring the elected state governments. Literally all powers are centralized in the hands of the union government, though education is not in the central list. The Shamagro Shiksha in center state sponsored scheme with fund sharing in the ratio of 60:40. Despite having one of the best performance in Shamagro Shiksha, the state of West Bengal is deprived from its share. The minutes of program approval board of Shamagro Shiksha reveals that government of India has recommended rupees 2629 crore of budgetary outlay for 23-24 for the state, out of which the government of India's share was 1745.78 crore. Out of this 1745.78 crore, 311.29 crore has only reached the state. No money otherwise has reached. Despite a number of communications repeatedly from the state government, the government of India has not released any funds. The government of India did not release its share to the tune of 1433.71 crore in 23-24 and zero allocation in 24-25 till date. It will not be out of place to mention that the government of India has not released cumulatively rupees 3180.31 crore during 23-24 and 24-25 respectively to the state of West Bengal. The government of West Bengal under Mamata Banerjee is instead releasing its state share of 40% as well as additional allocation to the Shamagro Shiksha Society to ensure that the wages and salaries are given in time to the Shamagro Shiksha employees. Composite grant to schools and other student-centric incentives. The non-release of funds by the government of India, despite cleared by Ministry of Finance in favor of state of West Bengal, is a clear sign of deprivation of our people and is depriving our people from the right of education, and this is a clear violation of act framed by the parliament. Now we are learning from the media that due to the non-signing of MOU by the government of West Bengal for PM School for Rising India scheme, which is a separate scheme with separate guidelines, separate budget, separate SNA account, the fund release under Shamagro Shiksha has been stopped. Now, the state has raised its objection to the scheme, having name as PM3, despite fund sharing of 60:40. Secondly, there is no mention in the guideline of Shamagro Shiksha that signing of MOU for PM3 is a precondition for release of funds under Shamagro Shiksha scheme, which is designed under Right of Children to Free and Compulsory Education Act 2009. The new centrally sponsored scheme has been framed with funding pattern 60-40, and this is a scheme actually the government of India wants to create pressure on the states so that the states accept the scheme designed to implement priorities which are not agreeable to the state government. Now, the ideas of the ruling class, madam, are in every epoch the ruling ideas. The class which has at its dispensation the means of material production also in turns controls the means of mental production. This is pretty clear. When I heard Mr. Ghanashyam Tiwari speaking, I remembered these words because the NEP 2020 speaks of promoting critical thinking, scientific temper, and constitutional values. Now we have cut down what we have cut down from our text. We have cut down the periodic table. We have cut down Darwin's theory of evolution. We have cut down the theorem of Pythagoras. We are going on cutting down. We have cut down Michael Faraday's contribution to scientific understanding of electricity and magnetism. This has been removed. Even as thousands of scientists across the country have protested, the NCERT are not paying any heed.
Now, sir, Madam, I want to mention, in 2018, Minister of State, then Minister of State of Higher Education, Satyapal Singh, baffled the scientific community by demanding that the theory of evolution be removed from school curriculum because no one ever saw an ape turning into a human being. Other political leaders from the ruling dispensation came to his defense in the social media. The National Council of Educational Research and Training has decided to omit the chapter of the periodic table, telling that this is a rationalization exercise. I want to know from the Honorable Minister, what does this rationalization exercise means of omitting the periodic table from the curriculum? Now the council also has deleted chapters, democracy and diversity, popular struggles and movements, political parties, and challenges to democracy. Now, sir, madam, I come to the very important point of educational institutions run by the minorities. There are 54,000 educational institutions run by the Christian community in our country. About 7 crore of students go to these institutions every year. 70 to 75% of the students are not Christians. They are from different communities, Hindus, Muslim, Buddhists, Sikhs, even atheists. Why does the government want to interfere with the administration of this institution and